हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मुझे बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो देखी और सेल के बारे में आपका थोड़ा नॉलेज पता चला कि एक्चुअली में सेल है क्या। आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेल थ्योरी, एक्चुअली सेल की थ्योरी, सेल के बारे में बताया किसने। अभी आधे लोग यही सोच रहे होंगे क्यों बताया सेल के बारे में, मुझे पढ़ना ही नहीं है। It's very interesting. I'm telling you, if you study with dedication in parts. So let's get started. तो सबसे पहले सेल के बारे में बताया था मैथियस स्क्लीडन ने, जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल्स को देखा, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने कहा कि ये जो प्लांट्स में कुछ सेल्स हैं ये टिश्यूज बनाते हैं। फिर उसके बाद थियोडर श्वान ने कहा कि एनिमल सेल्स में एक आउटर कवरिंग है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद इन दोनों की थ्योरी को कंबाइन कर दिया गया। स्क्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, और उन्होंने कह दिया ये जो थ्योरी है इसका नाम रखते हैं सेल थ्योरी। पर वो उस थ्योरी में एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि उसमें ये नहीं बता रहा था कि एक्चुअली में जो सेल आ रहा है वो आ कहां से रहा है। तो फिर इस चीज को फर्दर प्रोसीड किया रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में, हु फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइड and new cells are formed from pre-existing cells, and this concept in Latin was known as omnis cellula est cellula। ये बहुत बहुत फिल्मी नाम सा लग रहा है, एकदम ऐसे उर्दू शायरी जैसा लग रहा है। omnis cellula est cellula, ऐसे याद भी रखना है। if you'll make things funnier, you'll remember it. You have to make it funnier no matter what. If you just read, you'll not remember. अभी इसको कैसे याद रखना है, इतना सा बड़ा से साइंटिस्ट के नाम है, वो भी राम, सीता और गीता जैसे नहीं है, बहुत मुश्किल नाम है। तो जो है इसको आप कोट के रूप में याद कर सकते हैं, MTSSR। Matthias Schleden, Theodor Schwann, Schleden and Schwann together formulated cell theory, and Rudolf Virchow. Coming to the next slide, which is what is cell theory now? What is the cell theory which is accepted by the people, and we are also accepting it and studying it in today's generation. So there are two concepts. First, that all living organisms are composed of cells and products of cells, and second, that all cells arise from pre-existing cells. कोई ऐसे हवा में नहीं आया है, सारे सेल pre-existing सेल से अराइज हुए हैं, और दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी, वो सेल से बना हुआ है। ठीक है, अभी सेल्स क्या होते हैं, सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज एग्जिबिट करते हैं। और क्यों डिफरेंट शेप और साइज एग्जिबिट करते हैं, इसका भी रीजन है। फर्स्टली, in this diagram you can see there are different types of cells. These cells are very important, so I have specifically taken these cells. First is red blood cells, which are round and biconcave in shape. White blood cells, which are amoeboid in shape. Columnar epithelial cells, which are long and narrow in shape. Nerve cell, which is branched and long in shape. And a tracheid, which is elongated in structure. And a mesophyll cell, which is round and oval in shape, which is present in plant. अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्यों भाई सेल, तो सेल अब उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कर दिया तो फिर और डिफिकल्ट नहीं हो गया? एक्चुअली दीज सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. If red blood cells are responsible for carrying oxygen in the body, so उसका शेप वैसा ही है कि वो उस ऑक्सीजन को कैरी कर सके। तो किसी भी सेल का जो स्पेसिफिक शेप है वो इसीलिए है ताकि वो उस फंक्शन को एक बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। And that is very important to understand, that if you are studying about cell, if you are studying about different types of cell, you have to focus on its shape and size, and you have to remember and memorize the functions of it. So that's the point. So these are some special facts about cells, and you have to remember it because this is very important. Firstly, that mycoplasma are the smallest cells. These are only 0.3 micrometer in length. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich.
Human red blood cells are about 7.0 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells, and the shape of the cell may vary with the function they perform. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई ये क्या है, अभी सेल पढ़ लिया, सेल क्या है वो पढ़ लिया, सेल थ्योरी किसने दी वो पढ़ लिया, है ना। पर अभी डिफरेंस यहाँ पे यहाँ हो जाता है कि अभी सेल के अंदर क्या क्या है और सेल एक्चुअली में दिखता क्या है. You have to relate this diagram with anything in this world you think you can relate. With anything. I am relating it to a platter of food. एक थाली की तरह मैं रिलेट कर रही हूँ इसको कि मुझे ये सेल नहीं दिख रहा, मुझे एक थाली दिख रही है और उस थाली में अलग अलग चीजें पड़ी हैं और मुझे जो अच्छी चीज लग रही है वो मैं पहले याद कर लूंगी और जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है वो मैं बाद में देख लूंगी, पर मैं याद कर लूंगी. आई विल ईट इट. क्यों? क्योंकि थाली पूरी खाते हैं, थाली में खाना नहीं फेंकते. तो मैं तो इसको थाली की तरह याद करूंगी. यू कैन रिलेट इट विद एनीथिंग. यू रिमेंबर दिस एट एज अ प्लेटर ऑफ फूड एंड यूल रिमेंबर इट ऑलवेज. यूल नेवर फॉरगेट इट. तो सेल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म एंड गोल्गी अपैरेटस, जिसको कुछ लोग गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं. अभी आपको जो बोलना है आप बोलो, आपको पता होना चाहिए कि वो होता क्या है और उसको लिखते कैसे, उसकी स्पेलिंग क्या है. सो प्रोनाउंसिएशन तो सबका थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो उसमें आप ये मत सोचना कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई इसको ऐसे कहता है, कोई वैसे कहता है. तो जस्ट हैव टू remember things in a good manner. So cell, what is inside a cell? These are the things which are inside a cell. These are things which are inside a platter of food, and I have to remember all of these things with their specific function. क्योंकि अगर आप थाली में कुछ खाते हो तो आपको पता होना चाहिए ना इस थाली में क्या खा रहे हो. अगर कुछ भी दे दिया और आपको नहीं खाना है तो आप कैसे खाओगे? आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या खा रहे हो और उसका फंक्शन क्या है. अभी जो है आप दाल पीते हो तो आप दाल क्यों पीते हो? क्योंकि वो प्रोटीन आपको प्रोवाइड करेगी ना. तो दिस इज वेरी इजी. यू रिमेंबर दिस एज अ प्लेटर ऑफ फूड एंड व्हाट द सेल हैज. सो this is probably asked in class 9th examination. It can be asked as 5 or 2 marks question. I don't know. It can be asked in any manner. So it has a distinct cell wall, जो उसका थाली का outermost layer होता है. Within it is cell membrane. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called nucleus. Nucleus contains chromosomes. Chromosomes contain genetic material, and a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. Membrane-bound distinct structures called organelles, like endoplasmic reticulum, rough endoplasmic or smooth, the Golgi apparatus, the lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. सेल बहुत टाइप के होते हैं, पता चल गया. सेल थ्योरी किसने दी? पता चल गया. तो बहुत सारी चीजें हम लोग को कल से पता चली, पुरानी वीडियो से और अभी से, कि व्हाट इज सेल, who gave cell theory, which cell theory is accepted now, what is cell theory, what are the two concepts in cell theory, how does cell look like, why cell has different shapes and sizes, what are the most important cells and its shape, and if cells has different shapes and sizes, then they perform different functions. That is why they are having different shapes and sizes. And what are the things present inside a cells? Inside a cell, that is cell wall, cell membrane, chromosome, genetic material, nucleus, rough and smooth endoplasmic reticulum, cytoplasm, Golgi apparatus, mitochondria, and many more things. अभी जितनी जिसकी श्रद्धा वो उतना खाना खाता है और उस खाने में बहुत सारी चीजें होती हैं. So you can relate it with anything in this world which is making easy for you to understand the concept of cell. And if you have any queries, and you can mail me in at cellclassesNAKA@gmail.com. And be happy, be safe, be confident of whatever you have learned, and just continue to watch the videos, continue to learn, be consistent, and just be jhakas. You can mail me your queries. I have listed my mail ID in the description box itself. So
All the best and best wishes.